We'll start with the presentation. Yeah, I got disconnected. So I've connected again. Now I'll share my screen. Is it visible to you guys? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Okay. So today we'll be studying about fashion cycle, right? So do you have any preliminary ideas related to fashion cycle? Guys, you need to reply. You cannot just keep yourself mum. To fashion which are handmade, design, clothes. I didn't get you. Could you please come again? Yes, guys. Do you understand what is a fashion cycle, or do you have any prior idea related to fashion cycle?
यस मैम, जैसे कोई ट्रेंड आया और फिर दोबारा रिपीट, मतलब फिर चला गया, फिर दोबारा से रिपीट हुआ, हुआ फैशन साइकिल। आपकी आवाज विनीत सही से नहीं आ रही, इट इज इकोइंग, कुड यू प्लीज रिपीट अगेन? हम जैसे कोई ट्रेंड आया और पीक पीक पे हुआ, फिर दोबारा से वो चला गया, और फिर दोबारा से रिपीट होके दोबारा से जिस कोई ट्रेंड करेक्ट. आया, तो दिस इज अ फैशन साइकिल। Okay, so there is a part of it that is not actually a fashion cycle. So the thing is, the thing is, cycle means that it is a closed loop, right? So to understand this better, I would put it this way: it is a process actually, right? Wherein you see the trends emerging. Okay, it gains popularity. Well, it has a, it has a curve like a parabola, right? So the thing is, whenever we introduce a new trend, okay, or we introduce something which is new, right, it takes some time, and it takes some times to evolve, or to get into people's notion, or to get into people's idea, right? It is not necessary that each and every cycle would be a, would gain popularity, or would be, gain a lot of energy while it is just launched. For example, if I talk about iPhone, right? So हर कोई वेट करता रहता है, एवरीवन कीप्स वेटिंग कि नया आईफोन 10 के बाद एवरीवन वाज वेटिंग फॉर आईफोन 12, राइट? उसके बाद फिर 12 के बाद 13, 13 के बाद 14, 14 के बाद 15, 15 के बाद 16, राइट? So every year Apple launches new products, right? But everyone has kept their eye open कि हम जब नया ट्रेंड शुरू होगा तो फिर इसको कैसे, इसको ये करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, right? So every time what the brand does is, I'll just draw a figure, it's just like this. So the curve is like this. Yeah, Nikita? यस मैम, ये हमें फंडामेंटल ऑफ फैशन डिजाइनिंग की लास्ट क्लास में पढ़ाया गया था, जिसमें 5 स्टेजेस होती हैं। Correct. जब कोई नया ट्रेंड आता है और एक वो राइज करता है इन स्टार्टिंग, एंड देन इट गोज पीक, Hmm. और फिर वो धीरे धीरे डिक्लाइन करना शुरू होता है, और एक ऐसा टाइम आता है जब उस ट्रेंड को हम रिजेक्ट करना शुरू कर देते हैं। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट. सो वी विल स्टडी दैट इन डिटेल कि फैशन इंडस्ट्री में ये होता कैसे है, ठीक है? ये फैशन इंडस्ट्री में ये होता कैसे है, एंड हाउ कम दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, हाउ कम दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन any kind of setup, or any kind of products that we are launching. So we will be studying that in detail. Okay, now this is the PLC curve. We say it as product life cycle curve. Okay, product life cycle curve में क्या होता है? Basically we introduce a new product into the market, right? It is not necessary that it is a it will be a very new product. It will have some changes. It could be a variation also. It could be a diversified product of the same original product. For example, जैसे कि अगर मैं आईफोन की बात कर रही थी आपसे, तो आईफोन 14 आया, ठीक है? 14 यू न्यू कि 14 एप्पल का ही प्रोडक्ट है, उससे पहले आईफोन 12, 13 ये सब आया था, राइट? तो अगर इफ यू आर कैरिंग एन आईफोन 13, right, and at the same time you get introduced to a new product which is a variated product from the the base product, which is iPhone 13. So definitely there are some changes, there are certain technical changes, there are some design changes. So this way we expect that this could be the popular, this could be the parameters wherein we would expect changes, right? Likewise, likewise, so when there is a new product also introduced into the market, okay, we see that कि एक नया प्रोडक्ट जब इंट्रोड्यूस होता है मार्केट में, इट टेक्स सम टाइम, क्योंकि वो पहले इंट्रोड्यूस हुआ है पहली बार, राइट? सो उसको लेके फिर जब हम लोग डेवलप करते हैं,
ठीक है, उस वो प्रोडक्ट जब मार्केट में रहता है, फिर लोग उसको जानते हैं, परखते हैं, यूज करते हैं, फिर लोग एक्सेप्ट करते हैं, फिर रिव्यूज देखते हैं कि कैसा है वो प्रोडक्ट, हाउ इज इट वर्किंग, इज इट वर्थ इट और नॉट। तो वो सब देखने के बाद अल्टीमेटली व्हाट वी थिंक इज दैट कि yes, this product is a good one, right? Likewise, उसके बाद फिर उसके वो पॉपुलर हो जाता है, राइट? जब पॉपुलर होता है तब यहाँ पे ये जो ग्रोथ साइकिल देख रहे हो ना, ग्रोथ, ठीक है, तो ये इंट्रोड्यूस हुआ, फिर ये ग्रोथ में गया जहाँ पे कि जो प्रोडक्ट को लोग एक्सेप्ट करने लगे धीरे धीरे, ये पॉपुलर होने लगा धीरे धीरे, और पॉपुलर होते होते इट गेन्स इट पॉपुलैरिटी, ठीक है। एंड आफ्टर दैट व्हाट हैपेंस इज, you know, this particular peak, this particular peak is the maturity point, the highest point of the curve here, this highest point, right? तो यहाँ पे क्या होता है, you understand that कि यहाँ तक ये प्रोडक्ट बहुत पीक में चल रहा है, राइट? उसके बाद ये प्रोडक्ट जब धीरे 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 नीचे आता है, ठीक है, जब नीचे आता है तो फ्रॉम दिस पॉइंट यू नोटिस दैट कि यहाँ से, are my cursor visible to you? Yes, ma'am. My cursors are visible, no? ओके, सो ये जब, तो अब ये देखो कि जब यहाँ पे ये पीक पॉइंट है, ये पीक पॉइंट से जब ये यहाँ से नीचे जाता है, दैट मीन्स कि ये धीरे धीरे अब लोग इसको एक्सेप्ट करना बंद कर रहे हैं, राइट? पीपल आर एक्चुअली, यू नो, are now moving towards a different product, right? Or maybe people have, you know, used that product, now they do not want to use it more, right? So there's a rejection stage, यहाँ से ये rejection start होता है after this point, क्योंकि यहाँ से देखो ये slope curve हो रहा है, ठीक है, from this point यहाँ से ये धीरे धीरे curve होके खत्म की ओर जा रहा है, ठीक है। तो तब क्या होता है, जब ये, सो ब्रांड्स और कंपनीज डू नॉट वेट फॉर द लास्ट मोमेंट कि ये पूरा आउटस्ट्रेट रिजेक्ट होगा तब जाके हम इस प्रोडक्ट को चेंज करेंगे या इसको मार्केट से पुल करेंगे। व्हाट दे डू इज इंस्टेड, यहाँ यही जब तब जब उनको पता चलता है कि नहीं ये अब ये रिजेक्टेबल मोड में आ चुका है, तब वो लोग एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं। दिस इज कॉल्ड प्रोडक्ट एक्सटेंशन, ओके, दिस इज प्रोडक्ट एक्सटेंशन, न्यू प्रोडक्ट एक्सटेंशन, राइट? तो यहाँ पे जब प्रोडक्ट एक्सटेंशन होता है तो लोगों का ध्यान इस प्रोडक्ट से छूट के इस प्रोडक्ट में आ जाता है, नए प्रोडक्ट में आ जाता है, करेक्ट? So the shift, okay, there's a shift in people's perspective and their ideas. So basically the companies plays with human psychology, right? So whenever you feel like rejecting the product, so what they do is they introduce a new product into the market from their brand, so that you guys, you the consumers, the you know, people stays loyal to the brand, so the loyalty is maintained, right? So the loyalty is maintained here. एंड देन व्हाट हैपेंस इज, यहाँ पे ये लॉन्च होने के बाद देन वी रियलाइज दैट कि ओके दिस प्रोडक्ट, यू नो, फिर इसका ये वाला स्टेज इंट्रोड्यूस होता है, ये जो नया प्रोडक्ट का, फिर इंट्रोडक्शन, फिर ग्रोथ, फिर मैच्योरिटी, फिर डिक्लाइन। तो वैसे ही जब ये डिक्लाइन स्टेज से स्टार्ट होने से पहले ही यहीं पे ही हम लोग नए प्रोडक्ट एक्सटेंशन का शुरुआत करते हैं। अंडरस्टूड? इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes, ma'am. Yes, ma'am. समझ में आ रहा है ना? Ma'am, yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके ओके ओके, लेट्स स्टडी कि ये साइकिल चलता कैसे है और इसको करना मतलब कैसे किया जाता है एंड एवरीथिंग, राइट? सो फैशन साइकिल रेफर्स टू अ प्रोसेस wherein fashion trends emerge, gain popularity, peak, and eventually decline over time, right? Which means that कि ये जो साइकिल है ना हम लोगों का, ठीक है, फैशन साइकिल, ये भी एक प्रोडक्ट की तरह। आप फैशन साइकिल का मतलब क्या है कि वी बेसिकली वी टेक नोट ऑफ द प्रोडक्ट, वी टेक नोट ऑफ द प्रोडक्ट, देन वी कॉल इट एज अ साइकिल, ओके? तो ये
ये जो साइकिल है ये इंट्रोड्यूस होता है एक पॉइंट ऑफ टाइम में, ठीक है, उसके बाद फिर धीरे 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 ये ट्रेंड्स इमर्ज होते हैं, उसके बाद फिर देन पीएलसी चलता है इनका, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, एंड देन फिर ये इवेंचुअली डिक्लाइन हो जाता है. इट encompasses various stages including trend forecasting, design, production, marketing and consumption. Here's an overview of the key components of the fashion cycle. Now, whatever you studied, okay, in fashion orientation, so that talked about, okay, that talked about this, the प्रोडक्ट के स्टेजेस के बारे में ये आपको बता रहा है, ठीक है, लेकिन ये स्टेज को अचीव करने, एक नया प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करने के लिए मार्केट में, व्हाट आर दी, यू नो, व्हाट आर द पैरामीटर्स दैट वी टेक इनटू कंसिडरेशन while we are launching a new product into the market. So this is for that, okay, this is for that. what are the what are the elements that we consider, or what are the parameters that we consider, okay, to launch a new product into the market, okay, to launch a new product into the market. So that is very very important, okay. Okay. So trend forecasting. First, we start with trend forecasting. Please make notes. Okay. ट्रेंड फोरकास्टिंग. ट्रेंड फोरकास्टिंग का मतलब क्या होता है, हम एक पर्टिकुलर ट्रेंड को फोरकास्ट करते हैं. फोरकास्ट मतलब क्या है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फोरकास्ट? जैसे कि प्रिडिक्ट करते हैं कि इन फ्यूचर फ्यूचर प्रिडिक्शन में एग्जैक्टली, वी प्रेडिक्ट द फ्यूचर, राइट, वी फोरकास्ट इट. फोरकास्ट का मतलब क्या, ये इसलिए होता है कि हम सोचते हैं कि आगे क्या चीजें आने वाली हैं, और व्हाट कुड बी द पॉसिबल पोटेंशियल मार्केट जिसमें कि हम इस चीज को लॉन्च करेंगे तो मे बी ये हो सकता है, राइट. सो दैट इज द थिंग. तो फोरकास्टिंग इन्वॉल्व करता है बहुत सारी चीजों को एनालाइज करना. एक फ्यूचर ट्रेंड को प्रेडिक्ट करने के लिए हम क्या 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 फैक्टर्स कंसिडर करते हैं, कल्चरल, सोशल, इकोनॉमिकल एंड टेक्नोलॉजिकल, ठीक है. तो जब हम एक ट्रेंड को फोरकास्ट कर रहे हैं, दीज आर द 4 प्राइमरी पैरामीटर्स दैट वी टेक इनटू कंसिडरेशन व्हाइल वी आर प्रेडिक्टिंग अ फ्यूचर फैशन ट्रेंड, राइट. तो कल्चरल, सोशल, इकोनॉमिक, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं, जैसे आजकल एआई का इंट्रोडक्शन हुआ है, ठीक है. एआई के इंट्रोडक्शन के बाद देन वी हैव सोशल, यू नो, कि लोग उसको एक्सेप्ट कैसे कर रहे हैं, वी अंडरस्टैंड पीपल नोशंस अराउंड इट, उसका इकोनॉमिकल इम्पैक्ट क्या होगा, ठीक है. ये सारी चीज़ों का ध्यान रख के, एंड हम कोई ऐसा प्रोडक्ट भी लॉन्च नहीं कर सकते जो कि कल्चरली सेंसिटिव हो और वो दैट वुड अफेक्ट अ मार्केट, राइट. सो वी टेक ऑल ऑफ दिस फैक्टर्स इनटू कंसिडरेशन, राइट. अंडरस्टूड? बताओ. यस मैम. So that is the thing. Trend forecasters usually gather information from diverse sources. So there are trend forecasters who actually gather information from throughout the world, right? They understand patterns, they understand the human psychology, they understand how people are introduced into different markets, and what are the possible responses that would probably they get from different and diverse market, because every continent or every geography operates in a very very diverse manner, right. हमारे यहाँ पे जो इंडिया में जो सोच है, you would not find that thought process which is there in US. It is different, right. If it is different, then how do we understand that? So the trend forecasters, okay, they understand the pattern, they go, they visit, they look for different areas, they understand the buying behavior of the consumer, they understand what is acceptable, what is the new upcoming thing, okay. वो लोग फैशन शो अटेंड करते हैं, सोशल मीडिया देखते हैं, कल्चरल इवेंट्स में जाते हैं, अंडरस्टैंड दी, यू नो, emerging styles क्या क्या हैं,
ठीक है, लोग एक्सेप्ट क्या करेंगे? अंडरस्टूड? यस Yes. मैम। तो ये जो डाइवर्स सोर्सेस से उनको इंफॉर्मेशन मिलता है, जहाँ से कि वो आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि क्या नया स्टाइल आएगा, क्या नया कलर आएगा, क्या नया पैटर्न आएगा, सिल्वेट आएगा। तो ये जब ट्रेंड फोरकास्टर्स अलग अलग जगह विजिट करते हैं, अलग अलग ट्रेड शोज में पार्टिसिपेट करते हैं, इफ दे गो टू डिफरेंट स्पेसेस, कल्चरल इवेंट्स में जाते हैं, फ्रॉम देयर दे गेन दिस वैल्यूएबल इंसाइट्स। ठीक है, और ये ट्रेंड फोरकास्ट, ठीक है, जब वो ट्रेंड फोरकास्टर जब अपना फोरकास्ट को प्रेडिक्ट करते हैं कि दीज आर द पॉसिबल एरियाज वेर इन, यू नो, दिस इज द नेक्स्ट बिग थिंग बट डिजाइनर्स कैन वर्क ऑन। ओके, ये बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल होता है डिज़ाइनर्स के लिए, ब्रांड्स के लिए, रिटेलर्स के लिए, मार्केटर्स के लिए, क्योंकि ये पूरा ग्लोबली सब कुछ रिसर्च करने के बाद ही दे कम टू अ कंक्लूडिंग, फोरकास्ट कि these are the things which are going to come. Okay, so WGSN is a company who do the trend forecasting. Promostil is a company who does the trend forecasting. तो ऐसे एक दो कंपनीज हैं जो कि दे आर नोन वर्ल्ड वाइड, ओके, फॉर दैट forecasts. Okay, so from from the forecasted material, the designers draw their valuable insights, and then they anticipate the consumer preferences, and then they plan their collections. Okay, कि इंडियन मार्केट में अगर ये ट्रेंड है तो उसको इंडियन वे में कैसे कस्टमाइज किया जाए, दैट इज द डिजाइनर्स जॉब. They understand the forecast, but then they customize it. Okay, understood? Yes. Yes, ma'am. Okay, now coming to design. Okay, design based on trend forecast and market research, fashion designers conceptualize and develop their collections. Okay, ट्रेंड फोकास्ट को ध्यान में रखते हुए मार्केट रिसर्च करके अपना जोग्राफी और डेमोग्राफी किस मार्केट के लिए वो टारगेट करके डिज़ाइन कर रहे हैं, उन सारी चीज़ों को ध्यान में रख के फिर डिज़ाइनर्स अपना जो आइडिया है, जो कलेक्शन का, जो वो कंसेप्चुलाइज करते हैं, ठीक है, फिर उस चीज़ को वो अपना तरीका, अपना टच देते हैं. दे गिव देयर ओन टच टू इट. Okay, definitely it is backed by a lot of research, by forecasts, market research and everything. ठीक है, ideate then they ideate and develop their collections. Okay, and then what they do is basically in that process they translate the trends insights, ट्रेंड के जो फोरकास्टेड जो इंसाइट्स हैं, ठीक है, वो इंसाइट को समझ के उसको ट्रांसलेट करते हैं क्रिएटिव डिजाइन एंड इनोवेटिव प्रोडक्ट्स में. ठीक है, दैट इज द जॉब ऑफ अ डिजाइनर, राइट? That is the job of a designer. So it is very well written that based on the trends forecast in market research, fashion designers conceptualize and develop their collections, right? Translating trend insights into creative designs and innovative products, right? Designers draw inspiration from various sources, including art, architecture, nature, and cultural influences. राइट? वो वेरियस जगह, अलग अलग जगह से लोग इंस्पायर हो सकते हैं, एंड इंस्पायर होने के बाद फिर उस चीज को कैसे वो अपने प्रोडक्ट में ढालेंगे, दैट इज द डिजाइनर्स जॉब. And that is called the design process that every designer undergoes, right? To understand this process better, you have to work around it. कि आप कोई चीज से इंस्पायर हुए, आपने देखा कि ये ट्रेंड है, then how do you amalgamate and how do you merge them? That is very important. That is the design, that is the USP of a designer, that they know to translate those insights into actual creative designs and innovative products, right? So which is why designers are paid, heavily, right? Because they are the one who, understand the focus, and then they convert it into something which is in life. Okay, which is tactile, which you can feel, touch, understand, and then carry it, right? So they take inspiration from various sources,
art, architecture, nature, cultural influences to create unique and distinctive fashion pieces. Okay, that reflect current trends and consumer preferences. Okay, so ये सारी चीजें हैं. They create a very unique and distinctive fashion pieces, which is an amalgamation of current trends, those are forecasted trends, and the inspiration, and which is aligned as per the consumer taste and preferences, right? Once the designs are finalized, then the production starts. Okay, ठीक है. We can decide on the timelines. Okay, depending on the complexity of the designs, कि प्रोडक्शन में कितना टाइम लगेगा, प्रोडक्शन मेथड क्या क्या है, सप्लाई चेन क्या है, रोबस्ट है कि नहीं है, क्या है, राइट. एंड you need to understand one very important thing, that fast fashion brands जो हैं, ठीक है, they have a very shorter production cycle, very short production cycle. Why? Because they need to replenish their stores with new stocks every time. Okay, in every 1 month you will see new products in their store, because they are fast fashion. Okay, आया गया ऐसे, correct. That is not classic. So they have a very, robust supply chain, and because they have very short production cycle, so the supply chain is so on point, that ki if you have been to a Zara store, in every 15 days you will see that ki pure store mein na ekdam naye set of clothes are hanging, new collections are hanging every time. Okay, in every 15 days they change the collection. Why? Because they want the consumers to engage, they want the consumers to get engaged, or ya to they want the consumers to be loyal towards the brand, and they think that fast fashion would promote that loyalty towards the brand. Okay, and so which is why they have shortened, enabling them to quickly respond to the changing trends and bring new styles into the market. So in fast fashion की चीजें आपको अच्छी इसलिए लगती हैं, because they quickly respond to the changing trends. फटाफट फटाफट, मतलब कुछ नया ट्रेंड देखा उसको बना के फिर स्टोर्स में, तो यू वुड फील लाइक कि अच्छा ये तो हमने देखा था पेरिस फैशन वीक में, ये जारा के स्टोर में है, सो यू वुड डेफिनेटली लव बाइंग इट. हु इज अ फैशन एंथुजियास्ट, who they would love to experiment, they would love to buy it, right? It's because of that only. You feel like that your wardrobe should have garments as per the emerging trends or changing trends, right? So which is why they bring new styles to the market within weeks, right? Within weeks, in every fortnight you would see that the collections, they have a new set of collections, right? So production is very important once the designers designs are finalized. But in terms of classic or maybe something which is not fast fashion, okay, so they take time, they launch their collection twice a year. Okay, spring, summer, and autumn, winter. Okay, and then they make the collections for 2 seasons, spring, summer, and autumn, winter. So they don't have this concept of changing their entire store. uh, you know they don't have the idea of changing the entire merchandise in every 15 days. So in every 4 months, apart from the sale time, in every 4 months you would see new collections. स्प्रिंग समर के लिए कलेक्शन जो 4 महीना चलेगा, ऑटम विंटर के लिए जो ये कलेक्शन है वो 4 महीना चलेगा, एंड रेस्ट 4 months फॉर द सेल एंड promotional event and everything. Okay, so this is how the production takes place. Okay, understood everyone? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. Okay, so now coming to marketing and promotion. ओके, आपने आप मुझे ये बताओ कि आप क्या क्या मार्केटिंग और प्रमोशन देखे हो इन टर्म्स ऑफ फैशन ब्रांड, एज इन आई मीन टू आस्क दैट कि फैशन
ब्रांड्स में आपने कपड़ा खरीदा है, आप लोग ब्रांड्स मॉल्स वगैरह गए हो, ठीक है, तो आपको नोटिफिकेशंस वगैरह भी आता है। तो व्हाट काइंड ऑफ प्रमोशनल एक्टिविटी हैव यू नोटिस्ड, you know in noticed in terms of developing a brand or maybe something? What kind of promotional activity you have noticed for the brands that you have been shopping for? बताओ। मैम एक बार क्वेश्चन रिपीट करना क्या है? मैं ये बोल रही हूँ कि आपने देखा है कि हर जगह मार्केटिंग वगैरह होता है, ठीक है, आप जिस ब्रांड से खरीदते हो, ठीक है, आपने देखा होगा कि वो अलग अलग मार्केटिंग प्रमोशनल एक्टिविटी करता है, ठीक है। व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ मार्केटिंग एक्टिविटी हैव यू नोटिस्ड फॉर द ब्रांड्स दैट यू हैव बीन बाइंग फॉर? अभी तक तो आप एक ब्रांड से खरीदते हो, मे बी लाइफ से और एनी ब्रांड, ठीक है, तो वो क्या क्या डिफरेंट मार्केटिंग स्ट्रेटेजी यूज करता है अपने ब्रांड को प्रमोट करने के लिए? दैट इज व्हाट आई एम आस्किंग। मैम मेनली तो हम जिस ब्रांड से शॉपिंग करते हैं, जब वो हमें बिल देते हैं तो वो हमारा फ़ोन नंबर ज़रूर लेते हैं, जिससे वो बाद में कॉल करते हैं, व्हाट्सएप करते हैं जब भी उनका न्यू कलेक्शन आता है या कोई ऑफ आता है, और हमारी ईमेल आईडी पे वो लोग बार-बार नोटिफिकेशंस करते रहते हैं। ओके, ठीक है, और बाकी? मैम It सोशल is मीडिया this के is a जरिए भी question for होता है। everyone, so everyone has to answer. Okay, yeah. सोशल मीडिया और एडवर्टाइजिंग जो हमें देखने को मिलती है, और किसी भी चीज पे ऐड आती है, तो हम कोई भी चीज देखते हैं तो बीच बीच में ऐड आती है, वो उनकी एडवर्टाइजमेंट होती है, Hmm. उससे हम अट्रैक्ट हो जाते हैं। Yes. Apart from that, मैम मैम बिल बोर्ड्स भी लगे होते हैं। होर्डिंग्स क्या? वगैरह, मैम बिल होर्डिंग्स। बोर्ड्स होल्डिंग। Yes, billboards and hoardings. Yes, absolutely. और क्या चीजें हैं? ये तो ट्रेडिशनल मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज हो गई। नए जनरेशन में क्या क्या नया हो रहा है मुझे बताओ। मैम इन्फ्लुएंसर्स को अप्रोच करते हैं वो लोग। यस, इन्फ्लुएंशियल मार्केटिंग इज इन्फ्लुएंशियल पार्टनरशिप्स, मार्केटिंग, ये सारी चीजें, इट इज देयर, दे डू दैट, ताकि जब कोई इंसान खरीद रहा है उसको वो एक्सपीरियंस समझ में आए, विच इज वाई उनको लगता है कि यू नो व्हेन यू टाई अप विद एन इन्फ्लुएंसर दे हैव अ ह्यूज फैन बेस, राइट? तो इन्फ्लुएंसर उनका प्रोडक्ट का रिव्यू भी देगा, उनके फैन बेस जो हैं वो भी देखेंगे उस प्रोडक्ट को, उसके बाद द ब्रांड जो है इन्फ्लुएंसर्स के थ्रू भी सेल करेगा, राइट? और क्या चीजें हैं? मैम डिस्काउंट कोड दे देते हैं जिसमें नेक्स्ट परचेज में उसमें हमें डिस्काउंट मिलता है। क्या क्या विनीत? मैम डिस्काउंट कूपन दे देते हैं जिसमें हमें नेक्स्ट परचेज में डिस्काउंट हाँ, मिलते हैं। करेक्ट। दे गिव यू डिस्काउंट्स, या एनीथिंग एल्स? बताओ बताओ। मैम ऑफर्स जैसे बाय टू गेट वन और दिस टाइप बंडल ऑफ। ऑफर्स, यस, यस। बंडल ऑफर्स भी देते हैं। और थोड़ा दिमाग में जोर डालो, और क्या करते हैं? बताओ बताओ।
मैम वो कूपन भी देते हैं, आपने शॉपिंग किया उसके बाद 1 मंथ आफ्टर वो कूपन भी देते हैं। और आजकल यूट्यूबर्स भी हैं जो काफी ब्रांड प्रमोट करते रहते हैं। हम्म। और और भी बहुत सारी चीजें आप मिस आउट कर रहे हो। लाइक मैम मैम ऐसा भी एग्जांपल हो सकता है, जैसे कुछ ब्रांड्स हैं उनके वो पुराने क्लोथ्स उनको दे के हम उनसे न्यू कलेक्शन के अपना कोई भी मतलब आइटम यस, बाय कर यस, सकते हैं, ये भी उनको प्रमोट करता है। यस। मैम एआई के थ्रू हमको फॉलो और ट्रैक करते हैं वो, जैसे हम कोई भी चीज़ गूगल पे सर्च करते हैं तो उसकी ऐड बार बार हमारे पास आती रहती हाँ, है। बिल्कुल, बिल्कुल। वो ऑप्टिमाइज कर देते हैं आपके सर्च को, दैट इज कॉल्ड सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। और क्या होता है? मैम सम ब्रांड यूजेस लिमिटेड एडिशन ड्रॉप्स, कि मतलब वो लोग अर्जेंसी यस, क्रिएट करते हैं। यस, यस, डेफिनेटली। वेरी गुड। और मैम जो ये बड़े बड़े ब्रांड्स होते हैं ये जैसे टीवी एक्टर्स या इनको उस तरह की क्लोथिंग वगैरह पहनने को देते हैं, जिससे कस्टमर उनको देख के इन्फ्लुएंस्ड होते हैं और फिर बाय करते हैं। मैं कविता समझी नहीं आपकी बात, फिर से आप जरा रिपीट करेंगे? मैम जैसे बड़े एक्टर्स या कुछ इस तरह के, जैसे अभी हम साड़ी भी परचेज करने जाते हैं तो बोलते हैं कि उस मूवी में करीना ने इस ब्रांड की साड़ी पहनी थी या इस ब्रांड की ड्रेस पहनी थी, करेक्ट, तो हाँ। वही वाले, तो वो एक्टर्स या टीवी एक्टर्स या बड़े बड़े इन्फ्लुएंस करते हैं। बिल्कुल। यू आर टॉकिंग अबाउट पब्लिक रिलेशंस। एंड व्हाट एल्स? मैम पे पर क्लिक, कुछ ब्रांड्स जैसे हम उसके एडवर्टीजमेंट को क्लिक करते हैं तो वो पर क्लिक पे करता है। यस, क्लिक पर पे। यस, यस। मैम सीजन के एंड में भी सेल्स लगती है। क्या है ना? सीजन के एंड में सेल्स लगा देते हैं। आपकी आवाज नहीं आ रही, प्रॉपरली नहीं आ रही आपकी आवाज। मैम सीजन के एंड में सेल्स लगा देते हैं। अच्छा। हम्म। हम्म। कनक बताओ कुछ। मैम क्वेश्चन अब रिपीट कर दे, क्योंकि अभी मैं ज्वाइन की हूँ क्लास, जस्ट अभी। अच्छा, हम लोग मार्केटिंग के बारे में पढ़ रहे थे। तो मार्केटिंग में मैंने ये क्वेश्चन किया था कि आपने देखा होगा कि आप बहुत सारे ब्रांड से कपड़ा खरीदते हो, तो व्हाट आर द डिफरेंट काइंड ऑफ प्रमोशनल और मार्केटिंग स्ट्रेटजीज that you see that the brand does to engage the consumers? समझ आया आपको क्वेश्चन? यस मैम। हम्म। ब्रांड्स पहले देखते हैं ना, पब्लिक फिगर मतलब जो पर्सन है जिसके जो इन्फ्लुएंसर्स है या आपकी अदर आवाज नहीं लोग आ हैं। रही है। अब जा रही मैम? हम्म। वो परचेज करते हैं किसी ऐसे पर्सन को जो पब्लिक फिगर है या जिसकी फॉलोअर्स वगैरह ज्यादा है, या ऐसे लोगों को परचेज करते हैं, फिर उनके थ्रू जो है अपने ब्रांड्स का प्रमोशन करवाना या परचेज करते हैं वो? अरे मतलब कांटेक्ट करते हैं मैम। हम्म। अ, उसके थ्रू भी अपने ब्रांड्स का प्रमोशन करवाते हैं फिर। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। यस मैम। हम्म। और क्या करवाते हैं? एफिलिएट मार्केटिंग, जिसमें जैसे मैं कल शॉपिंग कर रही थी तो एक ब्रांड में उसमें दूसरे ब्रांड के भी प्रोडक्ट्स उन्होंने कोलैब किया हुआ था। यस।
Affiliate marketing, what do you exactly understand by affiliate marketing, Nikita? जो मैम दूसरे ब्रांड के प्रोडक्ट्स को अपने उस पे प्रमोट करते हैं अपने प्लेटफॉर्म पे। To some extent, but there's a big term around it. So ये हम अब अभी हम affiliate marketing के बारे में पढ़ेंगे तो फिर ये क्लास खत्म हो जाएगी, right? ओके ओके मैम। Hmm. Acha. So you understood more or less what are the different kinds of, marketing and promotion which is done by the brands. Apart from that, what they do is they give you royalty. लॉयल्टी देते हैं ना, लॉयल्टी कार्ड, ताकि आप ब्रांड के लिए loyal रहो, आपके पॉइंट्स उसमें ऐड होते रहें, करेक्ट? हम्म। यस Yes, मैम। yes, ma'am. मार्केटिंग कैंपेन ऐसे बनाते हैं जैसे कि एक कोलैबोरेशन किया हुआ है, ठीक है, वो अपना ब्रांड के लिए एक स्टोरी क्रिएट करते हैं, ब्रांड इमेजरी डेवलप करते हैं, अब वो ब्रांड्स जो हैं वो ब्रांड्स के लिए अपना एक ये नरेशन भी पुट अप करवाते हैं, जो ब्रांड्स हैं कंज्यूमर्स के लिए, ताकि वो लोग उनके साथ कनेक्ट कर पाए। दे डू दैट, कैंपेन्स करते हैं, मार्केटिंग कैंपेन्स, ठीक है, एडिडास के देख लो, डिफरेंट ब्रांड्स के देख लो, दे डू कोलैबोरेट विद, जैसे एडिडास इज अ वेरी एक्टिव इन स्पोर्ट्स वेयर ब्रांड, तो वो स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज को लेके कोलैबोरेशन करता है। समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. यस मैम। तो जो सा ब्रांड है उस हिसाब से ब्रांड की इमेजेस को लेके वो उस हिसाब से उसका प्रमोशनल स्ट्रेटजी डिजाइन करता है, करेक्ट? नाउ कमिंग टू रिटेल एंड कंजम्पशन, हियर रिटेल में क्या होता है, सेम थिंग, फैशन प्रोडक्ट्स जो डेवलप होते हैं वो ब्रिक एंड मॉर्टर स्टोर्स में आ जाते हैं, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म में आ जाते हैं, ठीक है, तो लोग जाके वहां से खरीदते हैं, या तो ई कॉमर्स है तो दे सी इट, दे अंडरस्टैंड इट एंड देन दे बाय इट, राइट? अपने पर्सनल टेस्ट प्रेफरेंसेस, अपना पर्सनल चॉइसेस और स्टाइल प्रेफरेंस को लेके, और उनको जो लगता है कि ये, हाँ, ये बहुत ट्रेंडिंग है, तो उस हिसाब से वो चीजों को they do it, right? So they play a very important and a key role in curating and presenting fashion collection, right? They play a very very important role in creating and presenting a fashion collection, और जहाँ पे कि पर्सनलाइज शॉपिंग एक्सपीरियंसेस भी ध्यान में रखा जाता है, ठीक है, जहाँ पे मान लो आप एक प्लैटिनम कार्ड होल्डर हो, तो आपको कुछ ऐसे सर्विसेज मिलेंगे जो कि गोल्ड या फिर सिल्वर वालों को नहीं मिलेंगी, राइट? मान लो आप आपका जो ट्रेंड है, ठीक है, आपके जो फैशन असिस्टेंट्स हैं वो लोग क्या करेंगे, वो लोग आपको हेल्प करेंगे कि मैम आप पे ये अच्छा लगेगा, वो अच्छा लगेगा, एज पर, so basically there are stylists in the stores, okay, who helps you or assist you in buying a particular dress, right? होता है कि नहीं, कभी एक्सपीरियंस किया है? Yes, ma'am. यस मैम। When they assist you कि सर आप पे ये शर्ट अच्छा लगेगा, मैम आप पे ये ड्रेस अच्छी लगेगी, यू शुड गो फॉर दिस कलर, दिस इज अ न्यू कलेक्शन, ये आप पे अच्छा लगेगा, है ना? सो प्रोडक्ट लॉन्च होने के बाद व्हाट हैपेंस इज, so product launch होने के बाद, so what happens is that it is on the consumer now, they have to decide whether the garments or the collections that they are asking for is as per their taste and preferences. वो डेफिनेटली उनके टेस्ट और प्रेफरेंसेस के हिसाब से ही होगा, क्योंकि पहले R&D हो चुकी है, ठीक है, विच इज वाई वी कीप लुकिंग फॉरवर्ड, वी हैव सम आइडियल ब्रांड्स की ये ब्रांड्स बहुत अच्छे हैं, इस ब्रांड्स को लेके हम वी वुड बाय, it's because that the branch launches the collection as per our aesthetics, our design aesthetics, and that's how
they have been, driving the sales because they know कंज्यूमर्स को क्या पसंद आएगा एंड क्या पसंद आने पे हम और क्या बना के दे सकते हैं. तो उस हिसाब से वो डिजाइन टीम के साथ बैठता है, प्रोडक्शन करवाता है, मार्केटिंग कराता है, और फिर उससे सेल्स जनरेट होते हैं. अंडरस्टूड द एंटायर प्रोसेस? Yes, ma'am. इज इट Yes, क्लियर ma'am. टू एवरीवन? Yes. Yes, Yes, ma'am. ma'am. ओके. उसके बाद एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद ना, वही सेम चीज अगर आपके सामने रिपीट होती रहे तो आपको अच्छा नहीं लगेगा. यू फील लाइक दिस इज वेरी वेरी मोनोटोनस एंड दिस इज वेरी बोरिंग. तो क्या होता है कि फिर वो ट्रेंड क्या होता है, फिर इट गेट्स इनटू द डिस्पोजल और द डिक्लाइन स्टेज. ठीक है, जब हम चीजों को रिजेक्ट करते हैं तो लोग उसका सेल नहीं होता. अब जब सेल नहीं होता तो जो प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है वो तो कभी नहीं चाहेगा कि मेरा सामान वैसा का वैसा पड़ा रहे और सेल ना हो. So they would try to bring something which is more likely to be get sold, right? So that is the thing. So then they understand the intricacies of design. They understand that what is important, what would be as per the consumer taste and preferences, and keeping that in mind, they understand the forecast. They plan the collection. They take inspiration. They sit with designers, marketers, merchandisers. तो इसीलिए इसका इतना प्लानिंग पहले से होता है. मैंने आपको कहा था कि फैशन इंडस्ट्री ऑलवेज वर्क्स अ ईयर अहेड ऑफ टाइम, right? Why that is done? Now you would be easy, now you it will be easy for you to correlate things कि ये क्यों एक साल पहले किया जाता है, क्योंकि वो उसमें प्लानिंग एंड रिसर्च की बहुत ज्यादा जरूरत है, इन्वॉल्वमेंट है, राइट? सो विच इज वाई वो देखते हैं, टेस्ट मार्केटिंग करके प्रोडक्ट को लॉन्च करने से पहले टेस्ट मार्केटिंग करते हैं. वो देखते हैं कि वेदर दैट प्रोडक्ट इज एक्चुअली going to work in the market. Is there actually a demand for the product? Or maybe if they have diversified the product, or maybe have brought in some variations in the product, whether that is actually going to be, worth it or not. So they evaluate. Test marketing में evaluation होता है. If that works, then they go for production, for marketing, marketing. For then they get into the brick and mortar stores. You go, you physically buy the product, experiment with the product. They give you the warranty, guarantee, and everything on the product, right? उसके बाद फिर एक पॉइंट ऑफ टाइम में जब टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशंस विद द पैसेज ऑफ टाइम, जब टेक्नोलॉजी का इंट्रोडक्शन ज्यादा होने लगता है, इन्वॉल्वमेंट ज्यादा होने लगता है, व्हाट हैपेंस इज you yourself get very much upgraded. So you don't feel like using the age old techniques which has been there, right? So you prefer choosing a modern cutting edge technology over everything else. Understood? Is that Yes. clear to everyone? Clear, ma'am. Yeah. So fashion trends evolve and new styles emerge, right? Older styles eventually fall out of favor and enter into the decline phase of a fashion cycle, right? जैसे कि मैंने आपको बताया था, पीएलसी समझाया था. फैशन आइटम्स मे बी डिस्कार्डेड एंड कुड बी डोनेटेड, ओके, रिसाइकल्ड और रीपर्पस्ड डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन एंड वैल्यू. जैसे कि आप लोग देख रहे हो कि डेनिम को लोग उसको क्या कर रहे हैं, रीपर्पस कर रहे हैं, ओके, दे आर डोनेटिंग इट, डिस्कार्ड. In yesterday's class and day before yesterday's class, I was talking about sustainability, right? Depending on their consumption, depending on their condition, and depending on their value, they what they usually do is they think of how this product can be repurposed, recycled, or how that can be brought into use again, so that the value retains the same, the value is retained, right? So ये सारी चीजें करने के लिए you need lot of research. So
which is why sustainable fashion is the next, not next, I mean this is prevalent now. Sustainable fashion is a trending element. People are shifting. There's a paradigm shift in consumer perspectives, okay, in consumer mindset, that we need to shift towards something which is more eco-friendly, which would save our planet. We are responsible consumers, and we will responsibly produce and responsibly consume. I was talking about the 417 SDGs, if you remember, right? Sustainable Development Goals, right? I was Yes, talking ma'am. about 17 Sustainable Development Goals, and which is in point number 13, you heard about responsible production, responsible consumption, which is why sustainable fashion is there throughout, right? Sustainable fashion initiative aims to prolong the lifespan of clothing and minimize waste through practices such as upcycling, repair, resale, and rental, right? जैसे कि आजकल आप देख रहे हो कि देर आर लॉट ऑफ ब्रांड्स हु आर डूइंग रेंटल बिजनेस, कि आप कपड़ा, डेट दी रैम्प एक कंपनी है, यू कैन चेक द वेबसाइट, ओके. What happens in that company? So they basically give you the garment on rent. They give you the garment on rent. एंड रेंट कब देते हैं? जब आपको जरूरत पड़ती है. मान लो कोई फंक्शन है, कोई ओकेजन है, मान लो आप कोई डिजाइनर ब्रांड को 1 लाख 2 लाख दे के अफोर्ड नहीं कर सकते हो, ठीक है. अगर आप अफोर्ड नहीं कर पा रहे, इट इज नॉट इजी. नॉट एवरी वन कैन बाय अ गारमेंट विच इज वर्थ रुपीज 2 lakhs or 3 lakhs or 10 lakhs or whatever, बट यू हैव द कैपेसिटी टू गिव 2 days रेंटल, जो कि मान लो आपको 50,000 के अंदर आ जाएगा, फॉर एग्जाम्पल. ठीक है, शादी है, किसी के घर में शादी है और आपको रेडी होके अच्छे से जाना है, so you can rent the dress and then return it back. Okay, so fashion narratives have changed over a period of time. Okay, rather than buying a garment which is worth rupees 7 lakhs or 8 lakhs, it is better that you bring that garment home, you wear it on an occasion and then you return it back. You don't have the headache that कि अच्छा ये garment को मुझे रखना है क्योंकि ये 8 लाख का garment है. No, you buy, you pay a price, you rent it and then you give it back. समझ आया आपको? Everyone understood? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Not everyone is responding. I feel that कि maybe not many people are getting it. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Understood, ma'am. Hmm. Okay. Overall, the fashion cycle is a dynamic and a very very cyclical process that reflects the ever changing nature of fashion. तो आपको एंड कंज्यूमर कल्चर, तो आपको ये चीज तो अच्छे से समझ आ गया कि इंडस्ट्री में चेंज इज द ओनली कांस्टेंट थिंग, है कि नहीं? हर चीज Yes, ma'am. देयर इज अ चेंज, हर शिफ्ट में देयर इज अ चेंज, हर जिस हिसाब से लोगों का नीड और प्रेफरेंस और कंज्यूमर पर्सपेक्टिव चेंज हो रहा है, तो उस हिसाब से सब कुछ चेंज हो रहा है. करेक्ट है ना? हो रहा है ना? Yes, ma'am. So that is the thing. By understanding the various stages of fashion cycle and factors that influence trend development and consumption pattern, industry professionals can adapt and innovate to stay ahead in a competitive and fast paced market. तो ये सारी चीज़ों को जितने अच्छे से रिसर्च करके समझ के इंसान काम करेगा और इंडस्ट्री ऑपरेट करेगा, तो दे विल ऑलवेज स्टे अहेड इन द कॉम्पिटिटिव मार्केट, क्योंकि आज के डेट में कंपटीशन हर जगह है ना. एंड टू फेस दैट कंपटीशन यू ऑलवेज हैव टू इनोवेट. एंड इनोवेशन तभी आएगी when you have that free mind to understand what would be the next thing, right? Yes, ma'am.
You understood the PLC curve, right? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Okay. Fashion trend cycles. Now, these are the three different cycles. Okay. This is a representation, graphical representation, wherein you can understand. Okay. This is the left. In this graph, you can see the x-axis stands for time and the y-axis stands for volume. Okay, sales volume. So in a fad fashion, okay, fad का मतलब क्या है? Which comes and goes. The time is very short-lived. Fast fashion brands. Fast fashion brands always, have fad cycles. Fad cycles मतलब क्या? बहुत कम टाइम में इंट्रोड्यूस हुआ, राइज हुआ, मैच्योरिटी, डिक्लाइन एंड देन ऑब्सोलीट, फिर वो हट गया मार्केट से. ठीक है, एकदम बहुत, देखो कितना कम टाइम में ये हो रहा है. इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम द प्रोडक्ट इज इंट्रोड्यूस्ड, देन ही गेट्स ग्रोथ, मतलब उसको ग्रोथ, वो मतलब लोग एक्सेप्ट करते हैं, देन देयर इज अ राइज इन सेल्स, देन एक पॉइंट ऑफ टाइम में लोग खरीदते खरीदते बहुत ऊब जाते हैं, फिर देन देयर इज अ डिक्लाइन स्टेज, दे डोंट फील लाइक प्रमोटिंग दैट पर्टिकुलर ट्रेंड एनी मोर, देन डिक्लाइन एंड देन ऑब्सोलीट, राइट. सो ये जो 5 स्टेजेस हैं गारमेंट के हिसाब से मैंने आपको बताया. तो ये जो फैड है, दिस इज फॉर द फास्ट फैशन ब्रांड्स लाइक जारा, H&M, different kinds of brands, right? Understood? सेकेंड इज योर स्टैंडर्ड साइकिल. जैसे मैंने आपको बताया था, ब्रांड्स, रिटेलर्स 4-4 महीने में, 2-2 सीजन में लॉन्च करते हैं. ठीक है, सो दोज आर स्टैंडर्ड साइकिल्स. इंट्रोड्यूस हुआ, फिर राइज, फिर मैच्योरिटी, फिर डिक्लाइन, फिर ऑब्सोलीट. सो इट इज अ पूरा ईयर का एक ग्राफ वो दिखा रहा है, पूरे ईयर का. ठीक है. और क्लासिक्स क्या है? जो कि इंट्रोड्यूस हुआ, राइज हुआ, मैच्योरिटी हुआ, मैच्योर हुआ, फिर भी आज लोग उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं जस्ट द वे इट इज. फॉर एग्जाम्पल डेनिम, जीन्स, प्रोडक्ट डाइवर्सिफाई हुआ, लेकिन आज के डेट में भी रेगुलर स्टाइल का डेनिम, इट इज अ क्लासिक. इट इज अ क्लासिक. Levi's 501 denim, it is a classic, right? Blazers, single breasted, double breasted blazers, generally men's fashion are more into classic styles. Men's fashion, especially formals, semi formals, because there are not much changes in the garment, very limited changes, right? But women's have variety of products, and as per that it changes. क्लासिक स्टाइल्स में आपके साड़ीज आ जाएंगे, क्लासिक स्टाइल्स में आपके कुर्ते आ जाएंगे, क्लासिक स्टाइल्स में आपके this will come, this shorts, formal shorts will come, single breasted, double breasted blazers will come, denims will come. जो कि एक बार मार्केट में इंट्रोड्यूस हो गया, मतलब वो चलता ही रहा, वो उसका कभी कोई फॉल ही नहीं हुआ, मतलब उसका कोई डिक्लाइन स्टेज ही नहीं आया. ऑब्सोल्यूट तो बहुत दूर की बात है, उसका कभी डिक्लाइन ही नहीं हुआ, राइट? ओके. Okay. Now coming to seasons, okay, what are the fashion seasons? Fashion has, the common season fashions are fashion industry are spring, summer and autumn, winter. ये मैंने आपको थोड़ा brief बताया था. तो फैशन इंडस्ट्री ये 4 चीजों पे, ये 2 सीजन्स पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है, राइट? स्प्रिंग समर में, spring summer is one season and autumn winter is one more season, right? Clothing brands almost always offer collections on these periods. These are the basic seasons
जहाँ पे फैशन ब्रांड्स अपना कलेक्शन लॉन्च करते ही करते हैं, ठीक है, दिस इज अ मस्ट. These are called the primary seasons and main collections for the season, right? This season brings new styles for warmer weather, right? स्प्रिंग समर में आप कैसा कपड़ा पहनना चाहते हो? कैन यू टेल मी वन बाय वन? हम्म, बताओ. मैम फुल लाइट स्लीव्स टी फैब्रिक, शर्ट. एक 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 करके बताओ. मैम फुल स्लीव्स टी शर्ट स्प्रिंग सीजन में. फुल स्लीव टी शर्ट. यस मैम. गर्मी नहीं लगेगी आपको फुल स्लीव? मैम स्प्रिंग सीजन में पॉसिबल हो सकता है शायद. यस अलका. अलका बताओ. मैम कॉटन कुर्ती, हम्म. हम लाइक कॉटन कुर्ती हाँ, वाइट कलर कॉटन. में। कॉटन कुर्तीज, लाइट शेडेड colors, यस. fabric, lightweight fabrics and breathable fabrics. Even Georgette is also good for spring or summer. Okay. Now, now let me put it this way. In summer, we sweat a lot, isn't it? Geography और demography के हिसाब से in India we sweat a lot in summer, right? So we always prefer something which is more airy, okay, which is very breathable, which can, has the property of moisture wicking, so that it can absorb our sweat and can keep us cool, right? Right, which can keep us cool, right? Lightweight fabrics, casual cotton fabrics, लिनन. तो जनरली हम लोग ये सारी चीजें यूज करते हैं, ठीक है. और कलर्स भी क्या है कि बहुत कलरफुल होते हैं, बहुत प्रिटी कलर्स होते हैं समर में, ठीक है. पेस्टल शेड्स आप देखोगे, है ना. कलर्स ऐसा देखोगे जो कि आपको अच्छा लगेगा, आंखों को बहुत प्लीजिंग है ना. बिकॉज और समर में यू वुड जनरली सी garments are more printed, right? So we need to understand that ki whenever we are promote, we need to understand that ki whenever we see a collection, it is important for us. It is important for us to understand whether this is a collection for spring, summer or autumn, winter, right? Spring, summer में ऐसा नहीं है कि dark colors use नहीं होते, होते हैं, but in what terms? That is very important. That is very very important. Likewise, spring summer में हमेशा you would often see that spring summer में हमेशा we have lightweight, airy, breathable, moisture wicking property वाला fabric, pastel colors, bright colors में कपड़े होते हैं. You have blouses, skirts, shorts, swimwear. You have, those lightweight linen shirts, midis, right? You have these things in your collection for spring, right? Coming to winter, coming to winter, you have another season which is called autumn winter, okay, which is called autumn winter, okay. So autumn winter में क्या होता है? Autumn winter में it's about colder temperatures. It is about colder temperatures, wherein we prefer wearing layers. लेयर्स क्यों चाहते हैं हम पहनना? क्योंकि ठंड होती है. ठंड से बचने के लिए वी वुड ऑलवेज प्रेफर टू वेयर क्लोथ्स इन लेयर्स, है ना. इट इज ऑल इन विंटर.
we tend to use warmer or thicker clothing, wool, cashmere, right? Puffer jackets, और jumpers, cardigans, blazers, scarves, boots. ये सारी चीजें हम विंटर्स में पहनते हैं क्योंकि हमें ठंड से बचनी होती है. वी नीड टू प्रोटेक्ट आवर बॉडी, राइट? लाइकवाइज, और देखना जनरली समर में वाइट्स, लिनन्स, लाइट शेड्स इसलिए यूज होते हैं ताकि वो धूप को रिफ्लेक्ट करे, ठीक है? बट इन विंटर्स you would see that the colors that they use in their collection is preferably darker, is often darker in color than summer, and and these are also high priced. समर क्या है, एरी है, ब्रीदेबल है, पतला है, ठीक है, लेकिन विंटर गारमेंट्स आर मोर एक्सपेंसिव, थोड़ा हायर प्राइस में होता है. इट्स बिकॉज इट हैज लेयर्स एंड लेयर्स ऑफ क्लोथिंग, राइट? इट हैज लेयर्स एंड लेयर्स ऑफ फैब्रिक्स विच इज स्टिच्ड टुगेदर, राइट? यू हैव डार्कर शेड्स. व्हाई? बिकॉज डार्कर शेड्स में क्या होता है कि धूप अब्सॉर्ब होती है, तो इट हेल्प्स यू टू कीप योरसेल्फ वार्म, है ना? It helps you to keep you warm, right? The American industry also uses the term fall winter. अमेरिका में ऑटम विंटर को फॉल विंटर के नाम से भी जाना जाता है, FW, right? For the abbreviations fall winter, FW, or in UK autumn winter, right? Autumn winter. So these are the different kinds of abbreviations like spring, summer, autumn, winter. Autumn winter is known in UK. Fall winter is known in America, right? In US. So ऐसे ही there are different perspectives of thoughts, different perspectives of thoughts in terms of fashion. स्प्रिंग समर में ये चीजें हैं, ऑटम विंटर में ये सारी चीजें हैं, ठीक है? These are the narratives which has been drawn and has been implemented over a period of time कि स्प्रिंग समर में ऐसी ऐसी चीजें लॉन्च होती हैं, विंटर में ऐसे ऐसे. नाउ यू कैन सी दिस स्लाइड wherein this talks, the left side talks about, where the left side talks about left side talks about the left side talks about the winter part and the right side talks about the summer part. Okay, so these are the important, these are the, you know, important criterias, okay, which we consider. These are the important parameters, okay, which we see in fashion seasons. Okay, we consider these parameters while we are making a collection. जब हम स्प्रिंग समर के लिए बना रहे हैं तो ये सारी चीजों का ध्यान रखते हैं, अगर ऑटम विंटर के लिए बना रहे हैं तो ये सारी चीजों का ध्यान रखते हैं. ठीक है? क्लियर एवरीवन? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yeah. Yes, ma'am. Now abhi tak, so we are done with the, you know, course. Now tell me, what doubts do you have or any questions that you would like to ask? Any question that you have in your mind to ask? आपको कोई डाउट नहीं है? कुछ नहीं है? मैम क्लास से रिलेटेड है, मेरा कल सेशन मिस हो गया था तो उसकी रिकॉर्डिंग क्लासेस मिल जाएगा? क्या क्या? मैम मेरा कल क्लास मिस हो गया था तो रिकॉर्डेड क्लासेस मिल जाएगा? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल मिल जाएंगे आपको. आप अपने सेंटर से कोऑर्डिनेट करना, वो करा देंगे, दे देंगे आपको. ओके. हाँ, ओके. ये जैनब,
जैसे कल की क्लास में आपने बताया था कि इन्वायरमेंट पे इम्पेक्ट पड़ता है किसी भी चीज का, तो जैसे चीजें फॉर एग्जांपल कि प्लास्टिक जो आप है अपना वो माइक्रोफोन पास रख के बोलो। एक मिनट जस्ट मिनट। मैम जो कल की क्लास थी मैं उसके रिगार्डिंग पूछ रही हूँ कि जैसे इन्वायरमेंट इम्पेक्ट पड़ता है किसी भी इंडस्ट्री में कुछ होता है तो फॉर एग्जांपल अगर प्लास्टिक के बैग्स या फिर कुछ भी मतलब वो बैन हो जाता है कि आप प्लास्टिक के बैन आप प्लास्टिक के बैग आप यूज ना करके पेपर के बैग यूज करो, फिर वापस से बैन होने के बाद वो प्रोडक्ट वापस से क्यों आ जाता है मार्केट में? नो, इट इज, सी दैट इज द थिंग, लोगों को वो सस्ता पड़ता है, लोग वो जबरदस्ती खरीदते हैं बिकॉज दे थिंक दैट इज इम्पोर्टेंट। मैम आफ्टर 1-2 इयर्स हमेशा ही ऐसा होता है कि वो जैसे अभी बैन हो गवर्नमेंट जाता है ने और फिर लॉन्च वापस किया, आ जाता है। देखो अभी जैसे गवर्नमेंट ने लॉन्च किया कि ओके ठीक है, हम ये प्रेफर नहीं करेंगे, मतलब हम ये चीजें नहीं बनाएंगे, ठीक है, कि हम प्लास्टिक्स प्रमोट नहीं करेंगे, प्लास्टिक बैग्स नहीं होने चाहिए, वी हैव टू पे अ प्राइस फॉर दी पेपर बैग्स, राइट। यस मैम। हम वो एक्सेप्ट कर रहे हैं, बट ऐसे कुछ लोग हैं मार्केट में जो कि स्ट्रीट वेंडर्स हो गए या कुछ हो गए, दे डोंट अंडरस्टैंड द रेपरकेशंस, बिकॉज दे डोंट अंडरस्टैंड कि इसका रेपरकेशन क्या होगा, दे डोंट कैलकुलेट द आफ्टरमैथ। कौन है उनको बताने वाला कि आप ये जो प्लास्टिक लेके बेच रहे हो, डू यू अंडरस्टैंड द रेपरकेशंस अराउंड इट, यस मैम। कि कहाँ जाके डंप हो रहा है। वो बेचारे वो तो लेके आ रहे हैं क्योंकि वो उनको फ्री में मांगते हैं कि प्लास्टिक दो, पॉलिथीन दो, तो फिर वो दे देते हैं, वो सस्ता पड़ता है। क्योंकि मैम बार-बार मतलब फैशन शो होते हैं इसके और फिर बैन करने के लिए बोला जाता है, लेकिन ये फिर मार्केट में दिख जाता है कुछ टाइम पीरियड के बाद। हम्म, वही तो, तब आप लोगों को यू हैव टू टेक अ कॉल, यू हैव टू टेल देम दैट कि नो, आप मुझे पेपर बैग में ही दो, और मे बी यू कैन कैरी योर ओन बैग and then you can go for shopping. I usually do that, I carry my own bag, क्योंकि हम प्लास्टिक को प्रमोट होना नहीं दे सकते, we cannot afford to do that, यस right? मैम। But what we can do is we can change ourselves. जब हम खुद लेके जाएंगे ना, तब 10 लोग देखेंगे भी, और वो जो दुकान वाला है वो भी सोचेगा कि हाँ मैम बैग लेके आती है या सर बैग लेके आते हैं, दैट मीन्स दैट कि मैम वो प्लास्टिक को प्रमोट नहीं करे। एक थोड़ा सा तो कॉन्शियसनेस डेवलप होगा, इट ओनली टेक्स वन इनिशिएटिव टू चेंज पीपल। ओके मैम, थैंक यू। या, एनीथिंग एल्स, anyone wants to ask any question related to the industry, or anything related to fashion? बताओ, मैम। बताओ हेलो बताओ, हाँ हाँ बताओ। मैम, जो शेड्यूल है वही क्लासेस होंगी या फिर और भी क्लासेस होंगी? क्या है? जो हमारी क्लासेस शेड्यूल हैं वही क्लासेस होंगी या फिर और भी क्लासेस होंगी? आपके क्लासेस मेरे साथ जितने शेड्यूल थे वो खत्म हो गए। अच्छा, तो मैम हमें रिवीजन करना हो तो कैसे करेंगे? आपके पास रिकॉर्डिंग्स तो होंगे ना? नहीं मैम। तो आप अपने सेंटर को कॉल कीजिएगा, वहां हम्म, से आप इंफॉर्मेशन ले लीजिएगा, और फिर हम्म। वहां से आपको रिकॉर्डिंग्स मिल जाएगी। ये भुवनेश्वर मैम? हाँ, भुवनेश्वर। ओके, थैंक यू मैम। या, एनीथिंग एल्स that you want to ask,
or understand? आप लोगों को कोई डाउट नहीं है? ऐसे कैसे यार? या तो आप लोग बहुत समझ गए या तो आप कुछ नहीं समझे हो. Either of the two cases. So what has happened? मैम, मेरे केसेस में तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे मतलब रिवीजन की जरूरत है। हाँ, रिवीजन की तो आपको रिवीजन की तो जरूरत पड़ेगी, ठीक है. बट कोई डाउट जो आप जानना चाहते हो इन टर्म्स ऑफ फैशन, आई मीन नॉट जस्ट related to your subject, but in general, because I have worked in the industry, I have worked as an academician, I have worked in the ministry, so you can ask me questions around that as well. मैम वो फैशन डिजाइनिंग का पोर्टफोलियो हम कैसे बना सकते हैं? फैशन डिजाइन का पोर्टफोलियो? यस मैम। आप आपने डिजाइन प्रोसेस पढ़ा है? नो मैम, अभी तो हाँ, तो जब आप डिजाइन प्रोसेस थोड़ा पढ़ोगे ना, कि आप एक इंस्पिरेशन लोगे, उस पे काम करोगे, तभी आपका पोर्टफोलियो बन पाएगा. मतलब कोई नया प्रोडक्ट बना रहे हो, पोर्टफोलियो बेसिकली मींस इट इज अ कल्मिनेशन ऑफ ऑल ऑफ योर वर्क्स, डिजाइन वर्क, ठीक है. तो आप वो डिजाइन कैसे करोगे? तो डिजाइन प्रोसेस समझोगे तो तभी तो आप करोगे ना. So यस once you मैम। understand the design process, you will develop your own projects. Okay, portfolio is nothing but a collection of different kinds of projects that you have been working for, right? पोर्टफोलियो में आपके डिफरेंट सेट ऑफ प्रोजेक्ट्स होते हैं, 5 to 6 प्रोजेक्ट्स होते हैं एज पर द रेलेवेंट इंडस्ट्री, राइट. जैसे मान लो आपका लेदर डिजाइनिंग कोर है, तो आप लेदर पे आपने डिजाइन किया. मेरा फैशन है तो मैं फैशन पे काम की प्रोजेक्ट्स को लेके. किसी का टेक्सटाइल है, किसी का प्रोडक्ट लाइफस्टाइल एक्सेसरी है. तो जिसका जो कोर है उस प्रोडक्ट को लेके, जो ये को लेके, मतलब डिसिप्लिन को लेके, तो फिर उस हिसाब से वो प्रोजेक्ट्स लेते हैं. और जो सबसे बेस्ट प्रोजेक्ट्स होते हैं वो पोर्टफोलियो में ऐड किया जाता है. सबसे बेस्ट प्रोजेक्ट, ओके मैम, थैंक यू। राइट. एनीथिंग एल्स गाइस? यस मैम, जैसे मार्केट में जैसे प्रोडक्ट कोई डिक्लाइन हो गया, जैसे कोई तो उसका जो मतलब जो माल है, जैसे तो वो मतलब कहाँ पे कैसे यूज होता है, किस तरह से, उसके रिगार्डिंग थोड़ा बता. मार्केट में प्रोडक्ट डिक्लाइन हो गया, उसके बाद विनीत व्हाट इज योर क्वेश्चन? जो जैसे जो माल बच गया है या मतलब डिक्लाइन हो गया, तो उसका क्या है, किस तरह से भी यूज हाँ, होता तो है. जो प्रोडक्ट बच जाता है उसको वो लोग सेल में डाल देते हैं, ठीक है. 50% ऑफ, 30% ऑफ, 70% ऑफ, सेल में डालते हैं. उसमें से बहुत सारे स्टॉक्स स्टॉक आउट हो जाते हैं, सेल हो जाता है. अगर तब भी नहीं होता फिर भी बचता है, तो फिर उसको क्या करते हैं वो लोग, वो उसको या तो डोनेट कर देते हैं इन टर्म्स ऑफ CSR एक्टिविटी, ठीक है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंडर में उसको डोनेट कर देते हैं. या तो उसको क्या करते हैं कि फिर जैसे कि आपके छोटे छोटे लोकल मार्केट्स होते हैं, ठीक है, वो लोग आके खरीद के ले जाते हैं उस चीज को, और बहुत कम प्राइसेस में. जैसे आपके दिल्ली में सरोजनी है, ठीक है, तो ब्रांड्स क्या करती हैं, उनको बेच देती हैं किलो वाइज, कि हाँ ठीक है 50 रुपए किलो ये सारे ले लो, ठीक है, पुराना पुराना सीजन का. और जनरली क्या है कि वो स्टॉक आउट हो जाता है. और कुछ चीजें हैं जो कि फिर वो यूज नहीं होती, तो फिर दैट इज लेफ्ट इन द डंप यार्ड, इट गोज इनटू द लैंडफिल्स. ओके मैम, थैंक यू.
मैम इन्हें यस। रिक्रिएट किया जा सकता है, क्या क्या? जैसे रिक्रिएट मतलब हाँ, दोबारा बिल्कुल क्रिएट। बिल्कुल रिक्रिएट किया जा सकता है। वो डिपेंड करता है कि वो लोग मटेरियल क्या यूज किए हैं, उस हिसाब से वो रिक्रिएट हो सकता है कि नहीं, वो देखा जाएगा फिर। जैसे हम घर सॉरी। जैसे हम जैसे हम घर करते हैं कोई भी क्रिएटिव मतलब अपने से ही कोई अलग डिजाइन बना के या कुछ उसमें करके। भावना, आपका क्वेश्चन क्या है? मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे हमने जैसे कोई फ्रूट है घर पे पहना है, उसको हमने अलग तरीके से और पहना है, मतलब कोई डिजाइन करके या उसी को किसी और कपड़े पे डिजाइन करके उसे रिक्रिएट करके अलग बना सकते हैं। तो क्रिएट कर सकते हैं, क्वेश्चन कुछ नहीं है। भावना, आई एम नॉट गेटिंग यू व्हाट यू। ठीक है, आपने कुर्ती डिजाइन किया, आपने उसको पहना, फिर उसको आपने दूसरे स्टाइल में उसको पहना, उसको स्टाइलाइज करके, फिर देन व्हाट यू आर आस्किंग? आपके वॉइस क्रैक्स हो रहे थे और कुछ बैकग्राउंड साउंड्स आ रहे थे, जिसकी वजह से मैं सुन नहीं पाई। इफ यू कुड जस्ट प्लीज रिपीट, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर योर क्वेश्चन। मैंने खुद में क्वेश्चन करके आंसर ले लिया। ओके, स्ट्रेंज। Is there anything else that you want to discuss, guys? No. Done? Yes, ma'am. No. मैम ये फैशन इंडस्ट्री का जो इंट्रोडक्शन था वो फिनिश हो गया इसका चैप्टर, राइट? क्या क्या? ये जो आपका जो चैप्टर था ये फिनिश हो गया, राइट? हम्म। तो मैम आपके साथ कल भी संडे को भी क्लास शेड्यूल है, तो वो क्लासेस होंगी क्या? आपके मेरे साथ 4 क्लासेस थे ना? यस मैम। हाँ, तो 4 क्लासेस जो शेड्यूल थे वो तो मैंने एक दिन पहले आपका ले लिया था, करेक्ट? संडे के भी क्लासेस शेड्यूल है? नहीं मैम, संडे को कोई शेड्यूल नो नहीं मैम, कोई क्लास नहीं है संडे को। हाँ, एग्जैक्टली। ओ, Because I know, रीशेड्यूल ही होगा। no. I know that Juhi, please check with whomsoever you have got the timetable with. ओके So मैम। you check with them that कि मेरा एक क्लास प्रीपोन हुआ था, ठीक है, मैंने एक क्लास पहले ले लिया था, जिसकी वजह से संडे को कोई क्लासेस नहीं है। तो मैम आपका पहले वाला क्लासेस तो आई थिंक मुझसे मिस हो गया, मैंने 3 क्लासेस अटेंड किए। हाँ, तो आप रिकॉर्डिंग ले लीजिएगा। ओके ठीक है। ओके मैम। या है। ओके। मैम कोई इसका कोई असाइनमेंट वगैरह तो नहीं बनना है कुछ क्या चीज? इस मतलब इस सब्जेक्ट में, जैसे फैशन इंडस्ट्री में कोई असाइनमेंट वगैरह कोई? Assignments, see, listen to me. Assignments, your classes, and everything is regulated by IGNU, right? I am a faculty, as a guest lecturer. I am taking your classes, okay, to make your concepts clear, right? I do not actually know that आपको assignments कौन देंगे, दो the assignments are pre-scheduled, उनको पता है कि क्या क्वेश्चंस रहेंगे क्या नहीं। सो यू बेटर टॉक विथ द पीपल एसोसिएटेड जहां से आपने एडमिशन लिया था, राइट? एंड दे कैन गिव यू बेटर क्लैरिटी ऑन दिस, बिकॉज I am not going to make any questions. I was here to teach you about how the fashion industry works. Okay. यस So मैम, you थैंक can यू। better contact your centers
center coordinators who are coordinating for these classes. You can speak to them. Yeah. Okay, guys. Thank you so much. Happy Dashera once again. Thank you, Thank you, ma'am. ma'am. Thank you, Thank you. ma'am. ma'am. Happy Dashera. Happy Dashera. Thank you, ma'am. Thank Happy you so Dasara. much. Thank you so much, guys. Yeah. Enjoy.